Assalamu alaikum students. I hope that maximum people have joined, and if anyone comes, then will join in. Students, in this subject of stylistics, we are studying different theories, approaches, and methods of psychology. And yesterday, in our yesterday class, we discussed there are different, rather 4 approaches or theories to style. And in the beginning of our lecture, I explained, and I can explain it again, that what's the difference between method and approach. So approach is a bigger step and a bigger way of seeing at things, and method is its smaller steps, how to do that thing and how to approach there. And I gave you analogy of one's personality, that from appearance, from dressing, from attitude, and different things are there that you can understand and know a person. And in our today's class, we'll be discussing about different methods. Yesterday we discussed approaches. Approaches are the techniques, are the theories, main things. And the methods that we are discussing, these are the steps. These steps can be helpful or used in any approach. Or some may be definitely for particular one approach, one method may be dedicated to one approach, but there are definitely certain methods which can be utilized for different approaches. Okay, here I share my screen with you, and the second file that I shared with you, already I've shared it a couple of days ago, and I'm referring to that file. Yes, students, here you can see these are methods of stylistics. Previously, we did different theories or approaches. If you want to have a little recap of that, then what were those approaches? Then the first was there were the 4. First was the traditional approach, and in traditional approach, things were somewhat ambiguous, not clear. And the second was individual approach. Individual approach is attached with different personalities, great personalities and celebrities in different fields. And thirdly, there was practical approach to style. Certainly, it is called also new criticism. In it, actually, the work is seen, not the author. This was the third approach. And then next, there was a fourth approach. Fourth approach is objective or linguistic approach, and it is considered that it is the most scientific approach. The 4 approaches are there. Then we have different methods, are the smaller steps which can be utilized to for these approaches. First, there is a little definition of this methods or methodology. This thing can be applied also in other fields. For example, if you're doing some literary research, then there is methodology. And method or methodology, method is just, it's a one instance, and methodology overall. And methodology defines the approach of science to the object of investigation and specifies its general orientation in our research. First, that method means these things can be utilized in different approaches. The first thing is stylistic analysis. With the help of this stylistic analysis, any approach can be covered. The most traditional method of stylistics is the method of semantico-stylistic analysis,
stylistic analysis, semantic and semantics meanings के हिसाब से होता है. This message aims at defining the correlation between language means employed for expressive conveyance of intellectual, emotional, or aesthetic content of speech or text, and the content of information. In it means the stylistic analysis, the words, they have certain meanings. And the meanings of words means some meaningful words are chosen for effective style. It is just a vocabulary based, this analysis. Means how much or how different vocabulary is used in that. That is called stylistic analysis. And the second method is comparative method. But it's a self-explanatory. It is evident from its name that it is comparing two or three styles. The comparative method is considered to be the nucleus of stylistic analysis method. Means it's very much central. To make the speech more effective, speakers constantly select definite language. Definite language means from a set of synonymous units. These language means have the best stylistic effect on the comparison with other language means, which are either less expressive or neutral in their given context. This style is somewhat similar with the first, as here again that the focus is on the word, but not on a word level, rather on the language level. The style is that should be, if it is impressive, then we can say that is synonymous to being get impressed according to that style. तो इसमें भी इसका मेन थिंग इसका है कि उसका जो इफेक्ट मिल रहा है वो किस तरह, एक स्टाइल से क्या इफेक्ट मिल रहा है, दूसरे स्टाइल से क्या इफेक्ट मिल रहा है. द मोर इफेक्टिव स्टाइल विल बी गिवन मोर वेटेज इन दिस मेथड. नेक्स्ट इट इज method of stylistic experiment. The method of stylistic experiment lies in substitution of the writer's words, utterances, or constructions for new ones with the stylistic aim. With the help of this method, it is possible to characterize the stylistic properties of the writer's text and approve of the substituted unit stylistic possibilities. This method was extensively used by such scholars as L. Sherba, O. Pashkovsky, and Boleshinsky. तो these are Russian scholars and philosophers. तो इस स्टाइल में जो किया जाता है कि राइटर एक किसी के स्टाइल के certain elements को और किसी elements के साथ substitute change कर देना है. Change करके तो फिर effect final देखना है कि whether other things they are equally effective or they are more effective or less effective. Because इसका सारी चीज़ों का मेथड का अगेन जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो आपके माइंड में रहना चाहिए कि दोनों तरफ से ये हो सकता है. अगर तो राइटर इन चीज़ों को देख रहा है तो वो अपने स्टाइल को इन लाइंस पे बेटर कर सकता है. तो आप अगर राइटर नहीं है तो यू आर रीडर्स, यू आर द ऑडियंस. तो ऑडियंस इन लाइंस पे किसी के स्टाइल को एनालाइज कर सकते हैं. तो इट इज जिस तरह से इसको कहते हैं कि एडिशन एंड डिलीशन करके आप उसमें स्टाइल में देख सकते हैं कि सर्टेन एलिमेंट्स हैं उनके बगैर स्टाइल बिल्कुल खोखला हो जाता है, या उसके और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट एलिमेंट्स डाले जाएं तो दे आर इक्वली इफेक्टिव. तो दिस मेथड ऑफ स्टाइलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, यानी कि उसके साथ एक्सपेरिमेंट जिस तरह लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया जाता है. Okay, the last method is the quantitative method, and it consists in defining the quantitative properties of a language phenomenon. Quantitative said, it's again self-explanatory. When things can be measured or counted, then this thing is called quantitative method. Using the quantitative data and specific calculations, the statistics method
aims at distinguishing peculiarities and regularities of language units. अब language units हैं, they have certain their special qualities, कुछ regular हैं, कुछ peculiar unusual चीजें हैं, तो how they function, so they can be evaluated and can differentiate individuals or functional styles. It establishes the statistic parameters of analyzed text or text. These parameters provide reliable or projective data for stylistic analysis. तो इसमें लास्ट में थोड़ी सी एक चीज जो है कि इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वांटिटेटिव ये आप अगर रिसर्च आपने कोई सब्जेक्ट रिसर्च का पढ़ा होगा तो उसमें ये डेफिनेटली इन टर्मिनोलॉजी से आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया होगा कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दीज आर द बेसिक टू टाइप्स ऑफ रिसर्च. तो क्वालिटेटिव होती है जिसमें आइडियाज होते हैं, जिसमें डिस्कशन होती है, जिसमें डिफरेंट लॉजिक की बात की जाती है, जिसमें चीज़ों को अपने आर्ग्यूमेंट के साथ प्रूव किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डेटा रिसर्च. और सेकेंड आ जाता है क्वांटिटेटिव, जिसमें जो है कि वो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, जिसमें मेजरमेंट्स हैं, काउंटिंग है. तो इस तरह की चीज़ें जो है कि ये यूजुअली ज़्यादा साइंटिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग लिंग्विस्टिक्स, तो उसमें किया जा सकता है कि number of mistakes, repetition of words, their number of syllables, their suppressed and unsuppressed syllables. तो इसको मैथमेटिकली जब काउंट किया जाता है तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. उसका फिर किया जाता है स्टैटिस्टिकल के उनको जब आप काउंट कर रहे होते हैं, उनके आप ग्राफ्स बनाते हैं, उसके चार्ट्स बनाते हैं, तो उसको एक विजुअल वे से अपने डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. तो ये भी एक मेथड है किसी के स्टाइल को एनालाइज करने का. और जो लोग ज्यादा लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं यूजुअली वो डिफरेंट राइटर्स के या डिफरेंट प्रैक्टिकली जिस तरह से कह लें स्कूल्स हैं, उनके सिलेबस हैं, बुक्स हैं, तो उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं. और उसके लिए डेफिनेटली एक वो बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर SPS कहते हैं जिसमें स्टैटिस्टिकल डेटा को उसके जो भी उसके डिफरेंट परसेंटेज निकालनी है, डिफरेंट ट्रेंड्स देखने होते हैं, तो वो उस सॉफ्टवेयर के साथ, उस पैकेज के साथ जो SSP के उसके साथ उसको किया जाता है. तो ये डिफरेंट कह लें कि आपने इस पे देखे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से आप उसको देख सकते हैं. पहला जो है कि अगेन एक जरा उसका रिकैप दे रहा हूँ एट द एंड कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस. तो स्टाइल में उसमें यूजुअली उसका के वर्ड के मीनिंग के हिसाब से देखा जाता है कि क्या उसको स्टाइल दिया गया है. तो देन इट इज अ कंपैरेटिव मेथड. कंपैरेटिव मेथड भी पहले से सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट किया गया है. कि डिफरेंशिएशन इसमें ये है कि उसमें इंडिविजुअल वर्ड से ये ओवरऑल लैंग्वेज के इफेक्ट को देखा जाता है कि उनसे एक लैंग्वेज कितनी इफेक्टिव है या लैंग्वेज की जो मीनिंग लिए जा रहे हैं वो किस तरह से एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से दूसरी कंस्ट्रक्शन किस तरह से ज्यादा इफेक्टिव है, उस हिसाब से उसको डिस्कस किया जाता है. और द थर्ड मेथड ऑफ स्टाइलिस्टिक एक्सपेरिमेंट. अब इस मेथड में क्या है कि ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड है कि उसमें सर्टेन जो कैटेगरीज है, सर्टेन जो लिंग्विस्टिक यूनिट्स हैं, उनको रिप्लेस करके देखा जाता है कि इसके साथ दूसरा जो यूनिट है तो वो किस तरह से काम करेगा. Last में that was a quantitative method. It is a statistical method कि जिसमें मैथमेटिकली चीज़ों को, वर्ड्स को, उनके वैरायटी को, उनके मीनिंग के हिसाब से, उनके यूसेज, उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काउंट करके जो मैथमेटिकल डाटा के हिसाब से उसको जब देखा जाएगा तो दिस मेथड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेथड. तो अब कंक्लूजन में फिर बता दूं कि ये दीज आर द 4 मेथड्स. और ये मेथड किसी भी जो हमने जो पहले 4 अप्रोचेस पढ़ी हैं उनके लिए एक छोटे स्टेप्स के तौर पे ये यूज किया जा सकता है. तो पॉसिबली ये सारे मेथड ही एक अप्रोच में यूज हो सकते हैं या एक पर्टिकुलर जस्ट एक मेथड को भी सिलेक्ट किया जा सकता है अपनी डिफरेंट अप्रोचेस के लिए कि जब हम किसी स्टाइल को एनालाइज करना चाहते हैं. Here I stop my lecture.